Okay. Right. So let's begin with Simpson's rules. Excuse me, sir. हाँ जी, बोलिए. Sir, that exercise on angle of LOL, Mhm. we could not do the sixth question. There is some problem in the sixth question. Can you please explain this? The sixth question is identical to the question of 15. तो उसी मेथड से करना है. मैंने क्वेश्चन नंबर 15 किया था ना, जी सर. वो सेम है. बट यहाँ पे तो सर रिलेटिव डेंसिटी भी नहीं है सर. Okay. So what should be the RD of the log? And density of water, fresh water दे दी है. जी सर. So can you make out a equation with square of RD as a variable? यस सर, वो आरडी का क्वाड्रेटिक तो बना बट सॉल्व नहीं हो रहा. Everybody has reached up to the quadratic. Quadratic तक सब पहुंच गए थे कि नहीं? नहीं सर. Quadratic तक नहीं पहुंचे. Okay. All right. So let me just give you a rundown on question number 6. What should be the RD of a homogeneous log of square cross section? So square cross section. This is the log, and let it float in water like this. Let the side of the square be x. Let the length of the log be L. Let D be the draft. So therefore, the mass of the log, the weight of the log, that is volume log into RD log is equal to underwater volume into density of the water. ये तो ओके है ना यहाँ तक तो? This is fine. जी सर. So volume of the log is Lx square, that is Lx into x is the volume of the log, into Rd of the log is Lxd, and ये है fresh water, so 1.0. Lx cancels, and so therefore I've got this relationship where x into Rd of the log, which I have to find, divided by is equal to D. So this is my situation. This is the relationship which I have. यहाँ तक ओके है? जी सर. यहाँ तक ओके है? Yes sir. Okay. So now I want KB plus BMT minus KG will give me greater than equal to 0. So therefore, KB is D by 2, BMT is x square by 12D minus x by 2 is greater than equal to 0.
Is this okay with everybody? यहाँ पे ओके है. Yes, sir. सो मैं बेसिकली अब x को रिप्लेस कर लूं या d को रिप्लेस कर लूं, एक ही बात है. whichever I want. So let me replace it with किससे रिप्लेस करना चाहोगे? बता दो, खुद ही बताओ. दोनों में से कोई भी कर सकता हूं मैं रिप्लेस. Sir, D को RD से. D को RD से. ओके. So therefore D is equal to x into RD upon log x into RD log. So मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं. मैं दूसरा भी कर सकता हूं, मैं x को भी रिप्लेस कर सकता हूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So it doesn't make. लास्ट टाइम मैंने x को रिप्लेस किया था इन टर्म्स ऑफ d. सो यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ, एक ही बात आएगी. सो x इंटू आर डी ऑफ लॉग डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 x and rd of log minus x by 2 is, let's say, equal to 0. सो एक x ये कट गया और ये कट गया, एक x by 2 कॉमन है, तो x by 2 को बाहर ले लिया मैंने. यहाँ पे क्या बचा, ये आर डी को मैं खाली r लिख रहा हूं जस्ट फॉर शॉर्टकट. सो r प्लस x by 2 बाहर चला गया, 1/6r minus 1 is equal to 0. Is this okay? जी सर. ठीक है. So therefore this multiplied by this is equal to 0, right? So x is definitely not equal to 0. X is definitely not equal to 0. Therefore r plus 1/6r minus 1 is equal to 0. So therefore LCM 6 plus 1 minus, नहीं गलती हो गई, 6r square plus 6r square. सो इसको गलत कर गया मैं, इसको LCM 6r, यहाँ पे आ जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6r इज इक्वल टू 0. ये ओके है? इज दिस ओके विद एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ठीक है. सो देयरफॉर न्यूमरेटर ले रहा हूं खाली, 6r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये ओके है? Yes, sir. ऑलराइट. नाउ ये क्वाड्रेटिक है आर में. सो बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, if this is a quadratic, then the roots of that equation are minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. This is the roots of a quadratic equation. इसी फॉर्मूले को मैं यहां लगा रहा हूं. So r is equal to minus b, so 6 plus minus under root of b square 36
minus 4AC. 4AC. So 6 fours are 24 over 2A, that is 12. ये okay है? Is this okay so far? Anybody, any doubts in this? Please ask. So therefore, 6 plus minus under root of 12 by 12. अब इसमें एक वैल्यू प्लस लो, एक वैल्यू माइनस लो और दोनों की वो निकालो. So 6 plus root 12 upon 12, 6 minus root 12 upon 12. ये दो वैल्यूज निकालो. So 0.2113 and 0.7887. 0.7887. Yes, sir. So इसका मतलब है कि जब भी मेरी आर डी की दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज जो है इन पे जब इस आर डी के लॉग तक मैं पहुंचूंगा तो मैं ओके रहूंगा. And when my RD is going to be in between these two values, then my GM will become negative. So when my R is going to be less than 0.2113, I will float upright. And when my R is going to be greater than 0.7887, then I will float upright. So for these R values, my vessel will float upright. Conversely, when my R is between these values, I will go have a negative GM and I will topple over. ठीक है? Is this okay? Is this okay? Sir. Yes, sir. Okay. Let us now come to. सर एक क्वेश्चन और था पास्ट पेपर का. हाँ जी बोलिए. सर ये सर MV handship is floating. Sir, can I send it on WhatsApp group? हाँ, yeah, you can just send it on the group. Then I'll just describe it to the March batch. No issues. You can send it on the March batch. सर भेज दिया है मैंने. Okay. Okay. हाँ, this is I told you कि जब मैं bounces कराऊंगा ना, so that time I'll do it with you. Okay, sir. Basically, change of trim due to change of density है. So you can find out the when she's going from salt water to fresh water. So when she dips by head, so how much will be the trim change? Okay, sir. We'll find this out. Trim change. So ये तो आप निकाल लोगे. Yes, sir. तो एक बारी TC ने आपने निकाल लिया, तो TC is equal to trimming moment upon MCTC. So trimming moment मिल जाएगा आपको. Yes, sir. इतना ट्रिमिंग मोमेंट मुझे चाहिए और मैं बायो हेड चला गया हूँ नीचे, तो मुझे आफ्टर पीक में बैलेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं इवन कील वापस आ जाऊं. ठीक है सर. सर तो आफ्टर पीक का LCG ले लेंगे और X को फाइंड कर लेंगे. So no, trimming moment is W into D. W into D, yes sir. Right. So W निकालना है मुझे. Yes, D sir.
D is the distance जो कि how much ballast should be run into the aft peak. Yes, sir. So LCF Okay, sir. and LCG of aft peak difference. LCF and LCG difference. Okay, That sir. will give me the D. Yes, sir. So W into D will be the same trimming moment जो चाहिए. ठीक है, sir. So that will be your W. Okay, sir. Got it, sir. ठीक है. सर यहाँ पे हम लोग 4 पीक से हाफ पीक में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो डी विल बी फ्रॉम 4 पीक टू हाफ पीक और फ्रॉम नहीं, सेंटर we are not transferring. We are ballasting. ओके ओके सर. He says run into the this thing. Run in का मतलब है ballasting. ओके सर. ओके. It is not transferring. Then we'll take distance from center of flotation. Correct. Okay, sir. Okay. All right. We are starting off on Simpson बाबा की जय. So Simpson बाबा का नाम ले लो क्योंकि Simpson बाबा आपको फेज 2 में भी आएंगे. So your fundas should be absolutely clear on Simpson Baba so that phase 2 is also secure. So basically what Simpson did was he created a set of rules so as to find out various areas of curvilinear shapes. So in the case of a shape, this is the, if this be the aft perpendicular, this is the forward perpendicular. This is a bird's eye view of the water plane. The actual vessel is underwater and you cannot see this from the top. So this is a 2-in-1 view where you are seeing the water plane look and you are also seeing the side look. Okay. So it is used for finding out areas on the ship. So of a curvilinear shape. This is a curvilinear shape. This is a curve. So there are two types of areas which you can find out. One is called as water plane area, what you are seeing right now. So this is the length of the vessel. This is the water plane area. The other is the port to starboard bulkhead. That area is called as cross-sectional area, CSA. So using Simpson's rules, we can find out WPA, water plane area, or we can use to find CSA, cross-sectional area. Cross-sectional area will be of a bulkhead. This is of a bulkhead. Water plane area is the area of the water plane. This is of the water plane. So Simpson's rules can also be used for finding out the GC of the water plane area. The geometric center of water plane area. By what better name do we know this as? The GC of water plane area.
By what better name do we know this as? Center of flotation. Correct. So definition of COF, geometric center of water plane area. That is the definition of center of flotation, GC of water plane area. So if I measure this distance from aft perpendicular, what do I get? AF. Correct. LCF or AF. Longitudinal center of rotation. So therefore, I can obtain LCF or AF. It's the distance from aft perpendicular to center of rotation. Using Simpson's rules, I can also calculate underwater volume. That means ये नीचे वाला portion. And using Simpson's rules, I can therefore calculate the GC of underwater volume. By what better name do I know that as? Center of buoyancy. Correct. COB. Center of buoyancy. So definition of center of buoyancy, GC of underwater volume. So ये मेरी underwater वाली आ गई. COB. If I measure this distance from aft perpendicular, what do I get? LCB. LCB or AB. So using Simpson's rules, I can obtain LCB or AB. And if I measure this center of buoyancy from keel, what do I get? KB. KB. So in KB, my reference axis is the keel. Keel is my reference axis. In LCB, my reference axis is aft perpendicular. Using Simpson's rules, I can also calculate second moment of water plane area. By what better name do I know this as? Second moment of water plane area. Moment of inertia. Moment of inertia. So what is the definition of moment of inertia? Second moment of water plane area. Moment of inertia, I. और I कहाँ पे यूज होता है? I कहाँ? BM. BM में यूज होता है. और कहाँ यूज होता है? FSC के लिए सर FSM निकालते हैं. FSM निकालते हैं. FSM. FSC के लिए. FSM is IDI. Moment of inertia into density inside. And FSC is IDI by W. Correct? So ये I उधर यूज होता है. So BM में भी यूज होता है. BM is I by V. And FSC में भी यूज होता है.
So using Simpson's rules, we can obtain second moment of water plane area. And using Simpson's rules, we can then calculate something called as center of pressure, COP, center of pressure. So Simpson is used for all these activities. Now out of all this, हमारे phase 1 में we will be doing 1, 2, 3 and 4. ये हम phase 1 में करेंगे. 5 and 6 will come in phase 2. ये phase 2 में आएगा. 1, 2, 3, 4 will come in phase 1. ठीक है? Is that okay? Sir, what is meant by second moment of water plane area? Means first moment and second moment. अभी अभी रुक जाओ. अभी चलने दो अभी कहानी जरा. अभी शुरू हुई है. So I'll come to that. So these are the various things that we will be doing. 1, 2, 3, 4 is what our prime focus is going to be. And ये moments हम करेंगे अभी. That is there in our syllabus. Okay. So let us start with Simpson's rules. All right. So Simpson, what he did was he created a set of rules. So Simpson said that if this be a water plane, this is the length. This is the aft perpendicular. This is the forward perpendicular. तो he said अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है इस वाटर प्लेन का, तो मैं इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता हूं. ये मैं सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं पोर्ट टू स्टारबोर्ड. ये पोर्ट टू स्टारबोर्ड. और मैं इन सेक्शंस को इक्वल डिवाइड करता हूं. तो ये इक्वल होने चाहिए एट ए डिस्टेंस h. ये h है डिस्टेंस. और ये जो डिस्टेंसेस हैं पोर्ट टू स्टारबोर्ड, इनको मैं कहूंगा ब्रेथ्स. दीज आर द वेरियस ब्रेथ्स. एंड अगर मुझे h कैलकुलेट करना है तो सिम्पसन सेड h इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय n-1, where h is the common equal interval. Common equal interval. H is the common equal interval. N is the number of ordinates for which H is the common equal interval. N is the number of ordinates for which H is the common equal interval. मतलब अगर मैं यहां से गिनती करूं
तो ये पहला वाला 1 होगा हमेशा. फर्स्ट वन इज ऑलवेज काउंटेड एज 1. सेकेंड ऑर्डिनेट इज दिस वन. ये ऑर्डिनेट है. सो 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब ये 7 मेरे ऑर्डिनेट्स हैं. सो मेरा n इस डायग्राम में 7 है. दोबारा बताना सर, एक मिनट. पहला वाला हमेशा गिनती में 1 होता है, तो 1. दूसरा वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is the number of ordinates. That means number of points जिनकी मैं breaths measure कर रहा हूं port to starboard. N is the number of ordinates. So अगर ये n वेरी करेगा, कभी 6 होगा किसी क्वेश्चन में, कभी 5 होगा, 4 होगा, डिपेंड करता है. तो जितने ज्यादा n होंगे h उतना छोटा होगा. Greater the number of n's, it's inversely proportional. ये जितना ज्यादा होगा ये सेपरेशन उतना छोटा होगा, उतना कमती होगा. Is it okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो सपोजिंग मैं आपको इस क्वेश्चन में दूं लेंथ इज 100 meters, then tell me the value of h. So h will be 100 divided by 7 minus 1 is 100 divided by 6, so many meters. That means ये कॉमन इक्वल इंटरवल इतने मीटर की सेपरेशन पे है. Is this okay with everybody? Yes, sir. All right. सिम्पसन ने कहा कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया कैन बी फाउंड आउट बाय अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला K इंटू H इंटू SOP. इसने ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया. और Ka को कहा कि K इज अ कांस्टेंट. H हमें ऑलरेडी पता है और SOP को एक नाम दे दिया इसने, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. SOP को इसने नाम दे दिया सम ऑफ प्रोडक्ट्स. अब he started with set of rules. So rule number 1, अलग अलग रूल बनाए इसने. So rule number 1, and each rule was dependent on n. n के ऊपर डिपेंडेंट था कि कितने n होंगे तो रूल उसके हिसाब से चलेगा. So rule number 1 was for all n's greater than equal to 3, then n5, 7, 9 and so on and so forth. That means all odd numbers. ये सबसे पहले स्टार्टिंग था. That means जब भी कभी n ऑड नंबर होगा तो क्वेश्चन में जब भी मुझे दिया होगा सबसे पहले मैं गिनती करूंगा, ऑर्डिनेट्स काउंट करूंगा. सबसे पहले गिनती मेरा काम ही होगा. अगर 11 आ गया, 11 मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब रूल नंबर 1 लगेगा. Then what he said was, for formula for rule number 1, he said area is h by 3 into SOP. ये इसने एक फॉर्मूला बना दिया रूल नंबर 1 का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रूल नंबर 1.
अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अगर कंपेयर करता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर रूल नंबर 1? One by three. 1/3. So K for rule number 1 is 1/3. Is this okay with everybody? जी सर. Okay. Next, what he did was, he said कि ये जो भी ब्रेथ्स हैं, जो भी ऑर्डिनेट्स हैं, इनको मैं एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. So therefore, what he did was he created a value of something called as Simpson multiplier for various n's. अगर n 3 है तो he said 1, 4 and 1 तीन ऑर्डिनेट हैं, उन तीनों को इन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करो. अगर सपोजिंग 1 2 3 खाली तीन ही होते, कुछ नहीं है बाकी, तो 1 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो ऑर्डिनेट्स. अगर 5 है तो 1 4 2 4 1 पहला और आखिरी हमेशा 1 होगा, दूसरा वाला हमेशा 4 होगा, उसके बाद 2 4 2 4 की चेन चलती जाएगी. 7 1 4 2 4 2 4 1 9 same story continued and so on so forth. ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं सर, प्लीज रिपीट. ये जो ऑर्डिनेट्स हैं उनको इन इन नंबर्स के साथ में वो कांस्टेंट वैल्यू नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपको सम उसका प्रोडक्ट दे देगा. ये मुझे मल्टीप्लाई करना है. अगर n 3 है तो 1 4 1 से मल्टीप्लाई करना है. पहले वाले को 1 से, दूसरे वाले को 4 से और तीसरे वाले को 1 से. अब इसमें 7 हैं तो मेरे सिम्पसन मल्टीप्लायर क्या होंगे? 1 4 2 4 2 4 1. ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 4 से होगा, ये वाला 2 से होगा, ये वाला 4 से होगा और आखिरी वाला 1 से होगा. जो भी ये ब्रेड 0 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी. सपोजिंग ये 2 मीटर्स थी तो ये 2 से 4 से मल्टीप्लाई होगा. सपोजिंग ये 3 मीटर्स थी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी. जो जो ब्रेथ है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी, कांस्टेंट वैल्यू से. ओके. अगर 5 होते तो ये नंबर होते, अगर 9 होते तो एक 2 4 और ऐड हो जाता, अगर 11 होते तो एक 2 4 और ऐड हो जाता. तो मतलब 2 4 2 4 की चेन बना रहा हूं मैं. ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. ओके. यस सर. Yes sir. सर ये ब्रेड से मल्टीप्लाई करे थे या फिर एच से? एच से मल्टीप्लाई होएगा? नहीं, ब्रेथ से मैंने जिस ब्रेथ के नीचे लिखा है ओके. ये ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा. सर बट ब्रेड तो सेम होगी ना, क्योंकि एच इक्वल है. नहीं, ब्रेथ कैसे सेम होगी? ब्रेथ तो आपको सेम लग रही है. पुट टू स्टारबोर्ड ब्रेथ देखो, पुट टू स्टारबोर्ड ब्रेथ सेम नहीं है. अच्छा वो ठीक है वो लेंथ एच ठीक है सर. वो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लाइन वो कह रहे हो? हाँ, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लाइन कह रहे हो. करेक्ट. ठीक है सर. वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द शिप. ओके सर. ओके. तो उसकी बात कर रहा हूँ. सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 1. Exercise 16, question number 1. Says find the area of a boat cover 10 meters long
Find the area of a boat cover 10 meters long. So length is 10 meters. And the breadths at equal interval from forward are as follows. They are given from forward. ठीक है. So सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा. लेफ्ट साइड हमेशा AP रखूंगा, राइट साइड हमेशा FP रखूंगा, हमेशा. ये मैं स्टैंडर्ड फ्रीज कर रहा हूं. आगे वाला मेरा ब्रेथ 0 है, तो ये मेरी 0 है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रेथ 2.25 है, पोर्ट टू स्टारबोर्ड, ये मेरी 2.25 है. नेक्स्ट वाली 3 है, पोर्ट टू स्टारबोर्ड 3 है. नेक्स्ट वाली 2.25 है, 2.25 है. और लास्ट वाली 0 है. ये मेरी ब्रेथ्स हैं. अब इसको ज्वाइन कर दो. ये मेरी बोट है जिसका मुझे कवर बनाना है. डायग्राम समझ में आया? इसमें ये मेरा H है, दिस इज माई H. सो सबसे पहला काम, आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट H. N कितना है? How much is N? 5. Does everybody agree on this? That N is 5. Yes, sir. बेसिकली जो भी ऑर्डिनेट्स दिए हैं उनको गिनती कर लो. 1 2 3 4 5. So N is 5. So H will be how much? 2.5 meters. यानी कि 2.5 मीटर के इंटरवल पे मैंने ये ब्रेथ्स मेजर करी हैं. ये 2.5 मीटर के इंटरवल पे है. सो आई विल मेक अ टेबल. I'll make a table. Title of the first column will be ordinates or breadths from forward. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में मुझे लिखना है. क्वेश्चन में फ्रॉम फॉरवर्ड दिया है तो मैं ऑर्डिनेट्स फ्रॉम फॉरवर्ड. क्वेश्चन में आफ्ट से दिया है, आई विल राइट ऑर्डिनेट्स फ्रॉम आफ्ट. And this is in meters. This is in meters. So therefore, ordinates from forward 0, 2.25, 3.0, 2.25, and 0. Title of the second column, Simpson multiplier. उसी ऑर्डर में 1, 4, 2, 4, 1. पहला और आखिरी हमेशा 1, दूसरा हमेशा 4, उसके बाद 2 4 2 4 की चेन जब तक पूरा भर ना जाए. अगर इसमें 11 होते तो मैं फिर 2 4 2 4 2 4 लिखता जाता. Is this okay? Yes, sir. All right. Title of the third column, area function. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इधर ले आओ. 1 zeros are 0, something, 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 something. इन सब को टोटल कर दो. SOP, ये आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स देगा.
24. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Everybody is on the same page? Yes. यहाँ तक कोई डाउट? Any doubt, anybody? Now, No, sir. okay. Area is equal to h by 3 into SOP. h मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था 2.5. 2.5/3 into 24. निकाल दो एरिया. 20. 20. So many meter square is the area. ठीक है, is this okay? Yes, sir. Okay. All right. So basically that is how we'll be doing it. ठीक है? So now this is rule number 1. जब भी odd number होगा हम rule number 1 यूज करेंगे. अब हमारे ये n ऐसे से बदलते जाएंगे. तो उसके लिए हर एक बदलने के लिए हम हर एक अलग अलग रूल लगाते जाएंगे. दैट्स द बेसिक थिंग. बट फंडामेंटल यही रहेगा कि फॉर्मूला है h वो रहा एंड उसके साथ में करेक्ट कर दिया. ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. ऑलराइट. सर डायग्राम है सर, इसमें ये तो नहीं है कि स्केल लेके बनाना है, ऐसे बना सकते हैं ना इसको? नहीं, बस ये ऐसे ही बनेगा. ये स्केल वेल का टाइम ही नहीं होगा हमारे पास. ये रफ डायग्राम होगा. बट थोड़ा सा नीट बनाना, ये नहीं कि घसीटा मार दिया एंड ऑल दैट. डोंट डू दैट. सो इट शुड बी अ नीट डायग्राम, फ्री हैंड. स्केल से लेके स्केल से बना दिया, दैट्स इट. बट एक्यूरेट वगैरह कुछ नहीं. कोई स्केल वो सब नहीं, मेजर नहीं करना. इतनी हमारे पास फुर्सत नहीं होगी. ठीक है, इज दैट ओके? ऑलराइट. सो आई वांट you to practice and do. I want you to do question number 2 from this exercise. Please do question number 2 from the exercise and do example number 1 and question number 2 from this exercise. All right? Yes, sir. All right. That'll be all. Okay then, see you then. Bye.